So good morning to one and all to the beloved family of the YouTube platform of Ashwini Jandiyal. You are watching Veterans Cricket League and it's match number 10 here from the ground 2 of Garota Jammu, where PREET Nagar Cricket Club, PREET Nagar United are taking on Team K.C.C. Although Team K.C.C are playing their first game and PREET Nagar United, they have lost one, they have one win in their kitty. We're all set to go now. The morning game here from ground to Garota Jammu, winning the toss, and PREET Nagar have been invited to bat first. So K.C.C have won the toss and they have decided to bowl first. They invited PREET Nagar to bat. Ashwini Sharma and Amit Raina, the two openers, the two big-time openers are out there in the middle. Suresh has caught the ball in hand, so we are all set to go. He's getting ready. He's going to start from the far end. And we have the fielders at their respective positions. We have the fielders on the offside. I could see 5 of them are inside the 30-yard circle on the offside and 4 of them on the onside region. 2 are patrolling the boundary line. Where you have the mandatory power play going on, and you have, those 2 men outside the 30-yard circle. And once again reminding you, you're watching this game live on the official YouTube channel of Ashwini Jandiyal, where Jandiyal Group's presenting you the Veterans Cricket League. Suresh, the first ball of the game, and he pitches it up to the batter, tries to see if there is some help when you bowl up to the batter, when you try to pitch it up to the batter. Let's see if it swings, if it moves away or in. But the batter just punishes him down the ground, down to long on. Just pushes him down to long on for a single. Off the mark is Vikas, and now it has been sorted out. There was a correction on the scoreboard. Vikas and PREET are the 2 openers to start the proceedings for PREET Nagar United. Suresh is bowling from the far end. 1, 2, 3, 4, 5 fielders I can see on the offside, inside the ring to save the single. So it will be a good contest to watch. PREET Nagar United, they have a very good form. They carry a very good form, but lost to that previous game. So they were defeated quite comprehensively yesterday in the previous one, but today it's a fresh day and they will look to get back to the winning ways. And the first over underway. They have first runs on board, 1 without loss. PREET and Vikas to start the proceedings. Yeah, those 5 fielders on the offside, mid-off, inside the ring, extra cover. Although it's a short cover catching position, point gully and short third man. And on the onside, he has got deep backward scare leg, long on, fine leg, and mid wicket in place. So with that field is set, Suresh is trying to bowl a bit fuller at the start of the innings. It's a new ball, it's a brand new ball, and there might be some help, there might be some assistance for a bowler. That is why he is trying to push the ball up to the batter. That's why he's trying to bowl it a bit fuller, and as I said, the first ball, he's just trying to see if there is some help for him, if there is some movement for him in and out, and that might trouble the batter when you pitch the ball full, and the batters are strong contenders to get them trapped LBW. And once again, this one is more fuller, aims the block hole, but has been nicely on-driven to long on. He's working in singles in the first over. I know it's just the beginning of the game. We're in the the starting moments of the game. Both if we talk about the bowlers, they will try to understand the nature of the wicket, and same goes the case for the batters as well. Upish, and it goes in the vacant area to the third man boundary for 4. He was playing away from the body, and
He gets the genuine edge, he gets the thick outside edge, and it beats that man at 30. It runs away quickly. That outfielder here at ground 2 is very quick. You get the ball in the gaps and it will run away down to the fence very quickly. First boundary for PREET Nagar Cricket Club. They're now 7 without loss. And Suresh, he was trying to force the batter to play away from the body, and he plays away from the body. He takes up the challenge and almost a wicket here, but it falls well in the gap and down to the fence for 4. Can Fuller delivery, wicketkeeper misses it, and it runs away down to the fence for 4. These are runs free of cost. The wicketkeeper was not able to hold on. You can't blame the bowler here. It was a very good delivery, swinging into the batter who goes for the drive, and he was beaten. The wicketkeeper makes an absolute mess. It's a blunder behind the stumps, which costs them a boundary. The final ball has gone down to the fence. 11 off the very first over. Those 4 byes costed, and that Suresh might not be happy with that effort by the wicketkeeper behind the stumps. Each and every run is crucial here. And you have to work hard on every run on this kind of a surface. We've seen it's very sluggish. There isn't that much bounce on offer. So as a batter, you'll have to earn those runs. You'll have to work hard to score those runs. Although 11 coming off the first over with Vikas and Puneet out there, and they will look to get off to a very good start. The openers out there, it's a must-win game for PREET Nagar United. Although K.C.C are playing their first game of Veterans Cricket League, which is presented by Jandiyal Grips. Joginder, he has got the ball in hand, will have to wait and watch. They're continuously going to operate with the spin from here on. The pace bowlers being operated, and he conceded 11 runs in the first over. The Joginder, and he also learns that there is some help if you pitch the ball up to the batter, but not that too full, that it's well within the hitting zone, that it's well within the hitting arc of the batter, and he will be punished. Although the power play is on, the mandatory field restrictions are on, and I could say that it becomes easy for the batters to clear the field. When it is in the zone, and the batters know the fact that just 2 fielders are placed outside the 30-yard circle, it's a mandatory power play going on, and have that long on, and third man out for Joginder. It's a different kind of fielder set, and that's a better line. That's a perfect line on that corridor of uncertainty on the good length area. Puneet was trying to go cross-batted. He was trying to go onside, and he gets beaten due to the nip of the surface. There has been a gentle zip as the ball skids on, and the batter was a bit late onto the delivery. Lucky that he didn't nick it behind the stumps. So the wicketkeeper is now back, and they have third man at the boundary as well. So we have seen that outside edge, and that one blunder by the wicketkeeper flying down to the boundary. They have now the third man out to protect the boundary, and have gully in place, point in place, cover and mid off on the offside, 4 inside the ring and 3 onside. Inside the ring, I can see fine leg is there, scare leg is there, mid wicket is there as well, with long on at the boundary. And the stage 12 runs have been scored by Puneet Nagar Cricket Club, Puneet Nagar United. Can you see varying the pace, and that's very much important on these sluggish surfaces. If you keep varying the pace, if you keep bowling in the right channels, in the right areas, it's for sure you're going to trouble the batters. And Joginder, although he has been excellent so far, 13, and he's conceded just 2 runs of 5 bowlers, needs to finish it well. Although it was Vikas trying to take the aerial route, no timing onto that one, a lack of timing. Although they have long gone patrolling at the boundary line, a single of the final ball, 2 overs gone, 14 without loss.
As a batting side, you're batting first. There is not much pressure on you unless that collapse happens, unless you lose wickets at regular intervals. If you keep wickets in hand, you're batting first, and you have that plus point of batting with freedom and batting with absolute liberty. And the power play is on, and the batters up there will try to see off the spell at least up to 4 overs. Then the next 2 overs in the power play, if you're well set there, you can go hard at the bowlers. Suresh, who conceded 7 in the first over, is back, and he has been hit hard but equally well fielded by Joginder. He has surely and definitely saved 4 runs for the team. That was absolutely hit hard by Vikas, and it's going to be a frustration for a batter. That was a certain boundary, and equally stopped by the fielder at mid-wicket. Very good save, saving 4 runs for the team. I remind you once again, this is Veterans Cricket League presented by Jandiyal Groups. And we have the 2 venues of Garota Jammu here, ground 1 and ground 2. K.C.C team are playing the first game, but fielding standards have been raised. They are raising the bars with their fielding efforts, and once again couple of runs have been saved by the fielder. So they're showing that example of that fielder set. They're raising the bars in the field. Wonderful efforts in this over. At least 6 runs have been saved so far. Suresh, although he was serving a bit weight to Puneet, and he drives punches on the up, but the fielder at short cover divers full length, and it's a very immaculate stop there. Next ball down the leg side it is. Now 16 runs on board. So far, if we consider the start of PREET NAGAR Cricket Club on this surface, as a batting unit in the power play, if you don't lose wickets, you have 36, 40, 45 on board, and you will take that, because we have seen on this ground run scoring hasn't been easy, although it's a bit smaller than the first one. That has been driven nicely on the up. A fumble there, and you see he isn't happy. The batter, the striker, isn't happy with the non-striker. The run was on, and he was reluctant to get that single. And that's where you need to be extra cautious, be clever, be quick running between the wickets, where you sense a chance that there is a run, and you need to put pressure on the fielders, you need to take on the fielders. Oh, that's a bad delivery, and put away to the fence for 4. He puts that one away in style. It was full onto the pads, and he just flicks that one away. Beautiful shot. It is the second boundary for Puneet, and that deserved the punishment. We're done. We still have 1 more delivery left. 20 without loss. Puneet finds one off the middle of the bat onto the legs, a full toss. That is a bread and butter for a batter, and he puts it away nicely down to the fine leg fence for 4. That was a very good strike, and that should boost his confidence. That should get him going. He was, getting edgy to get off strike, trying to take those non-existing singles. And now that boundary of this ball will make him feel very much comfortable out there. 10 of 10, while Vikas is 5 of 7. He's just manipulating the fielder now. The boundary costed, and they have that fine leg back. Those 2 fielders patrolling the boundary line on the onside, but now that offside area has been circled, offside area has been cordoned off. It's a wonderful step, Veterans Cricket League, where we have, the senior players playing, and one more important thing is that those 30 to 35 players, you need at least 2 players in the squad as well, and that is where the experience comes into play. I have seen some close games in this Veterans Cricket League as well, some breathtaking games in this Veterans Cricket League, and it's a wonderful step taken by Jandiyal Groups
And thank you very much as they have given us the broadcasting rights. We're highly thankful for Jandiyal Groups for providing us the chances, for providing us the opportunity to broadcast the live streaming and all the way from Kashmir here now in Country Cricket Stadium, Jammu. And we're enjoying our times out here. It's a wonderful atmosphere here. It will be the final ball now, and Suresh, none for 13 so far. And it will be important when the spinners will be introduced into the game, how the wicket behaves, how the surface behaves. It's the final ball and signaled wide by the umpire. 21 without loss after 2.5 overs. Going more than 7 runs per over here, 7.41, and they will take the start they have got. They will take it, there is no doubt about that. As PREET Nagar United will look to get off to a very good start. Say wickets, Apesh, but in the gap. And this one will run down to the boundary as well. Can you see Puneet is so strong on the offside, especially when hitting away from the body. That was outside off stump and Puneet nicely drives. That was exquisite off the bat and it runs away to the fence. Suresh has been expensive. 3 overs have been completed and the 25 without loss, going at a healthy run rate of 8.33 runs at the start of the innings. A good drive off the bat of Puneet. He moves on to 14 of 11. And now let's switch to Hindi or Urdu commentary so that the viewers can enjoy. तो पहले 3 ओवर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, खासकर पुनीत के बल्ले से अभी तक 3 चौके आए हैं. कि आखिरी गेंद पे वो जो चौका लगा था, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन वो 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकालने में कामयाब हुए थे और चौका जड़ा था. उन्होंने 14 पे पहुंचे, 11 गेंदों का सामना किया, 3 ओवर मुकम्मल, 25 बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे. तो सलामी बल्लेबाजों की ओर से अभी तक अच्छा आगाज मिला है प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम को. हालांकि वो अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं इस वेटरन्स क्रिकेट लीग जम्मू का. एक जीता है, एक हारे है. वो कल ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और एक अच्छी जीत दर्ज की थी कल एवरशाइन, और दूसरे मैदान में अभी उनका मुकाबला जारी है अगर एवरशाइन की बात करें तो. बाबा जीतोज वेटरन्स क्रिकेट क्लब के साथ वो 2-2 हाथ कर रहे हैं. इस पर गाइड के इस गेंद को थर्ड मैन की ओर 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था. और जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अश्विनी जंदियाल की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो मुकाबले हैं इस ग्राउंड 2 के वो इसी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे. और जो पिछले मुकाबले गए हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आपने देखे हैं. जोगिंदर गेंदबाजी के मोर्चे पे हैं. यहाँ पे हल्का सा फंबल हालांकि हुआ और इसके चलते 1 रन हासिल होता हुआ 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पे. तो मेरा मानना यही है कि पावर प्ले में इस तरह की विकेट्स पे अगर आप 40-45 रन बनाते हैं और आप कोई विकेट नहीं गंवाई है तो बेहतर काम किया है आपने. और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, 1-2 चौके भी देखने को मिले, रनिंग बिटवीन द विकेट्स. हालांकि उस पर थोड़ा सा काम करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं वो जो मौके उन्हें मिले थे रन चुराने के, वो चुराने में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि तालमेल में हल्का सा गड़बड़ नजर आ रहा है और जिसके चलते अभी वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है दोनों बल्लेबाजों का. जोगिंदर हालांकि अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी की है, इस बार बैकफुट पे मोड़ा इस गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, चौका मिलेगा विकास को. बैकफुट पे गए, क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया और पेस के साथ गेंद को वर्क किया ऑन साइड की जानिब. और सबसे बढ़िया चीज ये थी कि गैप ढूंढने में कामयाब हुए और चौका हासिल किया विकास ने. और ये पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ. ये चीज
केसीसी यूनाइटेड को भी समझनी होगी कि इस तरह की विकेट है कि चेजिंग करना इस विकेट पे काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे विकेट स्लो होता जाएगा जैसे दिन बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि विकेट दूसरे मुकाबले में जब वो क्रैक्स ओपन होते हैं, जब वो हल्का सा लूज मिट्टी रहती है, तो काफी मुश्किल रहता है इस विकेट पे बल्लेबाजी करना। कल हमने एक मुकाबला देखा जिसमें आखिरी 10 ओवर में टीम को 45 रन बनाने थे और उनके 9 खिलाड़ी बचे थे, लेकिन वो बदकिस्मती से 25 रनों से मुकाबला हार गए। तो वो चीज नजर में रखनी होगी केसीसी यूनाइटेड की टीम को, और ये कोशिश करनी होगी कि 130-140 के अंदर ही रोके आप प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम को। 150 के ऊपर काफी मुश्किल है इस विकेट पे चेज करना। 3.5 ओवर के बाद 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और खूबसूरती के साथ इस गेंद को ड्राइव किया है। पीछे खिलाड़ी जब तक वो गेंद को फील्ड करते 2 रन बनाने का मौका, लेकिन शानदार स्ट्रोक था ये विकास के बल्ले से। आगे आए थे, बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को ड्राइव किया। 4 मुकम्मल हो चुके हैं, 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। उम्मीद करेंगे कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं अश्विनी जंदियाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और वेटरन्स क्रिकेट लीग जम्मू का ये 9वां मुकाबला इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 4 ओवर के बाद 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे दोनों सलामी बल्लेबाजों की ओर से एक अच्छा आगाज। 8.25 के औसत से रन आ रहे हैं, और इसी औसत से चले तो 165 एक बड़ा स्कोर होगा इस विकेट पे, जहां विकेट काफी धीमा है, काफी स्लो है। स्पिन गेंदबाजों को अच्छा खासा मदद मिलता है। जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे, तो खासा आप परेशान कर सकते हैं बल्लेबाजों को, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी की है, और जब उन्हें वो खराब गेंद मिली है तब उन्होंने वो मौके तलाश किए हैं। कुल मिला के अभी तक इन 4 ओवर्स में 5 चौके लगे हैं, जिसमें विकास के बल्ले से 3 और पुनीत के बल्ले से 3 और विकास के बल्ले से 2 चौके। और 4 ओवर्स के बाद 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। लगातार सुरेश के हाथ में टीम के कप्तान ने गेंद थमाई है। दोनों जो सलामी बल्लेबाज हैं वो अभी भी क्रीज पे मौजूद, ऑफ साइड की तरफ। अब जाके गली, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ 5 खिलाड़ी अंदर है, जबकि ऑन साइड की जानिब जो पावर प्ले के दौरान 2 खिलाड़ी बाहर रखे जाते हैं, वहां मिड ऑन को अंदर बुलाया जा रहा है, जबकि स्क्वायर लेग को बाहर रखा है। साथ में फाइन लेग भी, हालांकि अब जाके फिर से तब्दीली कर रहे हैं। जो कवर पे खिलाड़ी थे उन्हें डीप कवर पे भेजा जा रहा है, और ऑफ साइड की जानिब मिड ऑन को अंदर बुला के फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात किया गया है। सुरेश पहली गेंद के साथ, और बैकफुट पे कट किया गया इस गेंद को। गैप में गेंद गई है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। चौका पहली गेंद पे, और इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए हैं सुरेश अभी तक। काफी ज्यादा रन उन्होंने खर्च किए हैं। उनका तीसरा ओवर है, और पहली गेंद पे उनका पुनीत ने इस्तिकबाल किया चौके के साथ, वेलकम किया चौके के साथ, कि खूबसूरती के साथ खेला गया था इस स्ट्रोक। पुनीत के बल्ले से 19 रन बनाए हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद। 4 चौके अभी तक उनके बल्ले से निकल चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। 35 रन है मजमूई स्कोर, 37 रन है मजमूई स्कोर। फिर से जगह मिली, और यहाँ 2 गेंदों पे 2 चौके। खराब गेंदबाजी सुरेश की ओर से, काफी जगह दे रहे हैं बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए, और पुनीत कहां बख्शने वाले हैं। जैसे ही जगह मिली, इतनी ज्यादा जगह देंगे तो हमेशा एक गेंदबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, और खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला उन्होंने। और सबसे अहम ये चीज रही है बल्लेबाजों की कि लगातार गैप्स निकाले उन्होंने। जब वो बड़ा स्ट्रोक आया है, वो गैप्स निकालने में कामयाब हुए, और जानते हैं कि 2 खिलाड़ी 30 गजदारी के बाहर है। जब भी आपको गैप मिलेगी तो रन्स भरपूर मिलेंगे। 2 गेंदों पे 2 चौके आते हुए, और स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पे। और कमाल का आगाज मिला है यहाँ पे प्रीत नगर यूनाइटेड को। जानते हैं कि उनके लिए करो या मरो मुकाबला है, डू और डाई सिचुएशन है उनके लिए आज इस मुकाबले में, क्योंकि एक हार चुके हैं, एक जीत चुके हैं, और आज जीतेंगे तो क्वालिफिकेशन सिनेरियोज नॉकआउट्स में, सुपर 8 में उनके लिए पक्की हो जाएगी। और अभी तक शानदार बल्लेबाजी की है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, और इसमें
पुनीत एक अटैकिंग बल्लेबाज रहे हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी की है खासकर सुरेश के सामने, और फिर से जगह मिली थी यहाँ पे, लेकिन इस बार गेंद हल्की सी नीचे रही जिसके चलते पुनीत वहां पे सही ढंग से गेंद को टाइम नहीं कर पाए और गेंद काफी नीचे रही सीधे विकेट कीपर के पास। ये पावर प्ले का 5वां ओवर जारी और प्रीतनगर यूनाइटेड ने अच्छी बल्लेबाजी की। कहीं ना कहीं K.C.C यूनाइटेड की ओर से वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला वो काफी हैरान कर देने वाला फैसला था, लेकिन वो जानते हैं कि सबसे पहली बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो पहला मुकाबला खेल रहे इस टूर्नामेंट का और विकेट के मिजाज को परखना चाहते हैं, तभी जाके उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन ये भी एक अहम सवाल है कि उन्होंने अगर लाइव ब्रॉडकास्टिंग में देखा होगा कि इस विकेट पे दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी 3 मुकाबले यहाँ पे हुए हैं उनमें साफ तौर पे नजर आया है कि दूसरी इनिंग्स में रन चेज करना काफी मुश्किल रहा है। सुरेश की अच्छी वापसी की है, इस बार फिर से गेंद ने बल्ले का भारी मोटा सिरा लिया। ड्राइव करने गए थे पुनीत, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी चुस्त थे और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 5 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। Excellent start for Preetnagar United. The 5 overs, they haven't lost a wicket and have 41 runs on the board. And let's wait. This is the final over of the power play, and have both the batters well set. Will they try to fetch some big runs in this one? We have seen the batters trying to cash in the final over of the power play if you have wickets in hand. If you have started well, and they definitely have started so good that they might take on Joginder in the final over of the power play. Yes, first ball tries to go onside. He's been given. He has been given. LBW tries to play across the line and he gets wrapped on the pad. The loud shout of LBW and up goes the finger. First ball off the fresh over. Thought that this is the final over of the power play and the batters might try to cash in onto the chances. You're well set there, but Joginder had other ideas. There was a nice delivery up to the stumps, bit fuller, and the mistake the batter done here is that he played down the wrong line. He should have been with a straight bat, but goes cross batted and he gets wrapped onto the pads. Umpire says yes, and the first wicket goes down. It is 41 for 1. Finally, there is a wicket and there is some respite for a bowler. Joginder was excellent. That is the reward for bowling tight lines and lengths. That's the reward. You bowling in the right channels, in those good areas, attacking the stumps. Harmeet Singh is the new man. The first ball, and Harmeet Singh might get some couple of runs here, might get some runs here, and he is off the mark. Attacking mindset. The first ball, he goes for a drive, although it wasn't from the middle of the bat, but still manages to get it down to third man region, that outer half of the bat, that thickish outside edge. A couple
to start his innings. 43 for 1. We have those two more deliveries. We have those two deliveries in this over, and he's produced a wicket and a couple of runs. The first ball he strikes, he got rid of Vikas. They are trapping him LBW. The wicketkeeper is up to the stumps, but still you see the batter is showing his heart out by leaving the crease. Although he was absolutely confident onto that he is going to meet the ball, and gets a couple of runs here, gets a couple here. And now again they're taking the bit of time in setting the field at mid-on. Long off comes in at mid-off and mid-on, and point goes back. That is a beautiful shot. Stand and deliver. This time he stands tall at his crease, lets the ball to come in, and then uses the bottom hand and goes high up in the air on the bounce down to the extra cover region for 4. So Harmeet has got that mindset from the very first ball. He's going to target the bowler, because you got a start and you need to convert that start into a big one. 47 after 5.3 overs. Trying to take on Joginder again. Runs away down to the third man region. The fielder is giving chase. Excellent stop there. And using the football skills, using his boot. But Harmeet, he is just swinging his bat from the very first ball. He moves on to 8 of just 3 balls. It is 49 for 1. So Harmeet is trying his level best to up the ante. He is trying hard to go off to Joginder in the final over. 9 runs have been conceded and a wicket as well. With the ball to go, 50 up here for PREET Nagar United. 50 for 1. And they will take the start they have got. It's a good start though. It's a wonderful start though. Yeah, got the final ball coming up of the power play, and Puneet, a well set batter, batting on 23, and he's going to face square drives. And the fielder at the boundary cleans it. It's a clean stop. The power play is completed, and 51 on board for the loss of 1. पावर प्ले का खेल मुकम्मल, और अब जाके फील्ड को फैला दिया गया है, और यहाँ स्पिनर का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्षित चड्डा को बुलाया गया है, और पावर प्ले के बाद स्पिनर का यहाँ पे इस्तेमाल। और ये अब देखना होगा कि स्पिनर क्या इस विकेट पे हावी रहेंगे। इस तरह से स्लो विकेट है, और हमेशा हमने देखा है कि इन जैसी स्लो विकेट्स पे स्पिनर अच्छा काम करते हैं। सिंगल आता हुआ अगली गेंद पे, लेकिन एज ए स्पिनर आपको पेस नहीं देनी है इस विकेट पे। जितना ज्यादा आप स्लो रखेंगे, जितना ज्यादा आप फ्लाइट देंगे, उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगा इस विकेट पे। तो अक्षित देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इस बार हरमीत के बल्ले से, सीधे बल्ले से उठाए इस गेंद को, और देखे जाएगी 6 रन। कि हमने ये बात जिक्र की थी कि इस विकेट पे आप जितना ज्यादा पेस देंगे, उतना ज्यादा आप महंगे साबित होंगे, और ऐसा ही हुआ। पेस दी, आगे डाली गेंद, और इसका फायदा उठाया हरमीत ने। उनके बल्ले से पहला छक्का आता, और पहला छक्का प्रीत नगर यूनाइटेड की पारी का। 58 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6.3 ओवर्स के बाद। हमने देखा है कि स्पिनर्स का बोलबाला रहा है इस विकेट पे, लेकिन उसके लिए आपको वो स्लो गेंदबाजी करनी होगी। इसके लिए आपको वो जो है अटैकिंग लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। एज ए स्पिनर जितना ज़्यादा आप इस विकेट पे रफ्तार देंगे, उतना ज़्यादा आपको मार पड़ेगी, और ऐसा साफ देखने को मिला अभी। छक्का यहाँ पे हरमीत के बल्ले से 300 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 15 रन बनाए।
कि 5 खिलाड़ी अब आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। जो मैंडेटरी पावर प्ले था 6 ओवर्स का वो मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद यहाँ पे स्पिनर का इस्तेमाल किया गया और काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं हरमीत जब से क्रीज पे आए हैं। एक चौका एक छक्का भी लगा चुके हैं और जो अभी तक उनके बल्ले से स्ट्रोक्स निकले, लेकिन एक ऐसा स्ट्रोक बाहरी किनारे से लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी मिडल किया स्ट्रोक्स को, उसके बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े स्ट्रोक्स लगाए और स्कोर बोर्ड में वो इजाफा करे। अच्छी गेंद, ये बेहतर गेंद है और हल्की सी फ्लाइटेड गेंद, हल्का सा पेस कम किया था और थोड़ा सा यहाँ पे गेंद में घुमाव देखने को मिला। बीट हुए वहां पे पुनीत, बाल बाल बचे, गेंद आउटसाइड एज के काफी करीब से विकेट कीपर के ग्लव्स में। 7 के बाद 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आठवें ओवर की शुरुआत, नए गेंदबाज को यहां तलब किया गया है और 7 के बाद 8.43 के औसत से 59 रन। पिछले ओवर में भी 9 रन आए और राहुल गेंदबाजी की कमान संभाले हैं। एक और स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है और पहली गेंद राहुल का भी यहां इस्तेकबाल किया गया है चौके के साथ। ये सबसे जो है सेफेस्ट एरिया है ग्राउंड का हिट करने के लिए। ठीक बॉलर के सर के ऊपर से बैकफुट पे इस गेंद को हरमीत ने उठाकर खेला और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए 20 पे पहुंचे हैं सिर्फ 8 गेंदों का सामना करने के बाद हरमीत सिंह। और आते ही उनका बल्ला बोल रहा है, आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने और वो रन रेट में इजाफा देखने को मिला है, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। बट खराब गेंदबाजी कि सही टप्पे पे गेंदबाजी नहीं हो रही है और बल्लेबाज के उस हिटिंग जोन में लगातार गेंदबाजी हो रही है और उसका फायदा हरमीत ने उठाया है। यहाँ ये आप उनके एरिया में गेंद डालेंगे तो वो बख्शने वाले नहीं है। सिर्फ 9 गेंदें खेली है और 21 रन बनाए, जबकि पुनीत 25 पे खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्पिन गेंदबाजों को चाहिए कि वहां पे विकेट के मिजाज को परख के गेंदबाजी करे। और इस बार अच्छा ड्राइव किया, हल्का सा फंबल हुआ खिलाड़ी से, इसका फायदा मिला बल्लेबाजों को, सिंगल मिलेगा। और गेंदबाज कहीं ना कहीं ये गलती यहाँ पे कर रहे हैं कि पेस दे रहे हैं बल्लेबाजों को, और बल्लेबाज को विकेट पे जब आप पेस देंगे तो काफी आसानी रहती है उनको बल्लेबाजी करना और ऐसा साफ नजर आ रहा है। 6 रन आए पहली 3 गेंदों पे। 8वां ओवर जारी है, एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रही है प्रीत नगर की टीम। ये इनसाइड आउट गए हैं, खूबसूरत ये स्ट्रोक और जाएगी मैदान से बाहर एक और छक्के के लिए। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, काफी ज्यादा जगह मिली थी और हरमीत सिंह ने इस बार बल्ला चलाया और जोरदार बल्ला चलाया और गेंद को भेजा उस ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ताकत भरा स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब। 12 आ चुके हैं 4 गेंदों पर, 71 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हरमीत का बल्ला 270 की स्ट्राइक रेट के साथ इस वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी। जब जब मौका मिल रहा है तब तक वो बड़े स्ट्रोक्स आ रहे हैं और जब भी अच्छी गेंद मिली वो कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक रोटेट करने की और छक्का लगाने के बाद कोई रिस्क नहीं लिया। हल्के बल्ले से ऑन साइड की जानिब टैप किया गेंद को और सिंगल चुराने में कामयाब। 9.19 के औसत से जब से हरमीत क्रीज पे आए हैं जो रन रेट है वो काफी ऊपर चली गई है। इस बार बाहरी किनारा और गेंद थर्ड मैन की ओर जा रही है, खिलाड़ी पीछे और रोकने में कामयाब जरूर हुए। इस बीच 2 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। काफी चालाकी से इस गेंद को खेला था पुनीत ने और 8 के बाद 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जो बल्लेबाजी दी गई थी आज प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम को, उस पे खड़े उतर रहे उनके बल्लेबाज, खासकर पुनीत और हरमीत। 15 गेंदों पे 35 रनों की धुआंधार पारी खेली अभी तक, और काका को बुलाया गया है। पुनीत ने 26 का सामना करने के बाद 30 रन बनाए हैं, और सबसे बड़ी चीज ये बल्लेबाजों के लिए कि विकेट उन्होंने नहीं दिया है, और गेंदबाजों को जब जब कि गेंदबाजों ने मौका दिया है वो बड़े स्ट्रोक्स जरूर आए हैं। और लेग स्टंप से बाहर ये गेंद खूबसूरती के साथ हरमीत ने इस गेंद को खेला फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। रन्स बह रहे हैं आज इस कंट्री क्रिकेट स्टेडियम घरोटा के दूसरे मैदान पे। 87 रन बने हैं 9 ओवर्स के बाद, और हरमीत ने सिर्फ 16 गेंदों पे 39 रन बनाए हैं। क्या कमाल की बैटिंग की है। आते ही इस मुकाबले का रुख पलट के रखा है उन्होंने। जहां 7-8 के औसत से रन बन रहे थे, अब 9.5 के औसत से रन बन रहे हैं। और पंच किया इस गेंद को, लेकिन शानदार स्ट्रोक ये भी था कि गैप इस बार तलाश नहीं कर पाए। शानदार बल्लेबाजी ये, और जान डाल दिए इस मुकाबले में, और कहीं ना कहीं वो टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला, और यहाँ केसीसी यूनाइटेड की टीम उस चीज पे गौर कर रही होगी। इस बार उठाकर खेला पीछे खिलाड़ी, हालांकि डीप पॉइंट पे मौजूद है। 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। हम बात कर रहे थे कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इस मैदान पे, जहां चेज अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों मुकाबले जो बैटिंग फर्स्ट टीम जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे गलती हुई है टीम के कप्तान से। देखना होगा कि जब से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो क्या किस तरह के कंडीशंस रहेंगे, लेकिन अभी बल्लेबाजी काफी आसान नजर आ रही है। 88 रन बने हैं 9.3 ओवर्स के बाद। ये 10वां ओवर जारी है, और काका को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पे, और अभी तक 3 गेंदों पर 6 रन वो खर्च कर चुके हैं। और जितनी तारीफ की जाए हरमीत की उतनी कम। 18 गेंदों पे 40 रनों की पारी, शानदार बल्लेबाजी, और सबसे अहम चीज कि अटैकिंग क्रिकेट खेली है। दसवां ओवर जारी है, 90 रन बने हैं एक बेहतरीन रन रेट के साथ इस वक्त प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम, और उनके लिए करो हमारा मुकाबला, तभी जाके आज उभर के आए हैं। अगर बल्लेबाजों की बात करें, गेंदबाजी भी उनके पास कमाल की है, तो मेरा ये मानना है कि मुश्किल रहेगा आज टीम केसीसी के लिए। दूसरे रन के लिए वापस पलट रहे हैं अच्छी रनिंग विकेट्स के दरमियान, और ये दिखाता है कि जब प्रेशर होता है कि सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 51 रनों की शिराकतदारी सिर्फ 28 गेंदों पर, 92 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हरमीत ने जिस रफ्तार से रन्स बनाए हैं, उस रफ्तार ने वो पूरा दबाव डाला है फील्डर्स पे, पूरा दबाव गेंदबाजों पे डाला है। हर ओवर से अब रन्स आ रहे हैं। आखिरी गेंद होगी 10वें ओवर की, आपेश खेला और बेहतरीन कैच वहां पे, गली पे खड़े खिलाड़ी, कमाल का कैच, डाइव किया और कैच लपकने में कामयाब, और इस हरमीत की धुआंधार पारी का खात्मा होता हुआ 20 गेंदों पे 42 रन बना के वापस जा रहे हैं। 92 पे लगा दूसरा झटका, 10 ओवर मुकम्मल।
चलिए, पानी का वक्फा मुकम्मल हो चुका है और हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं। पानी के वक्फे के बाद पानी का निसफ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और इसमें पूरी तरह से डोमिनेट किया प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम ने। सिर्फ 2 विकेट गंवाए और 9 से जायद की रन रेट से रन बनाए, 92 रन, जिसमें काफी अच्छा हाथ रहा है हरमीत सिंह की तूफानी पारी का और पुनीत भी अच्छा साथ निभा रहे हैं। अब जाके अश्विनी शर्मा नए बल्लेबाज चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान की ओर नमोदार हो रहे हैं, मैदान की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से अब देखना होगा कि किस तरह की बैटिंग होगी, क्या वही अटैकिंग माइंडसेट रहेगा। हालांकि एंड सब तब्दील किए गए हैं, एंड सब चेंज किए गए हैं। यहाँ कमेंट्री बॉक्स छोर से अब गेंदबाजी होगी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग रखा गया है बाउंड्री लाइन को पेट्रोल करने के लिए। थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर है, साथ में एक्स्ट्रा कवर है। ऑफ साइड की अगर बात करें, तालिब हुसैन को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पे और उनका पहला ओवर होगा इस मुकाबले में। 10वें ओवर के बाद उन्हें बुलाया गया है और जब एंड्स चेंज किए गए हैं तो इस एंड से क्या इफेक्टिव रहेंगे गेंदबाज, ये देखना होगा। पहली गेंद और पैड से जरूर टकराई लेकिन लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, साफ तौर पे नजर आ रहा था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही है और इस बॉल पे कोई अपील भी नहीं हुई। गेंदबाज भी जानते थे, विकेट कीपर भी जानते थे कि अपील बनती नहीं है। कि पुनीत ने जरूर एक छोड़ संभाल के रखा, एक छोड़ संभाल के गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की उन्होंने, जबकि अश्विनी शर्मा नए बल्लेबाज क्रीज की ओर आए हैं और साथ निभाएंगे वो पुनीत का। तालिब हुसैन अपना पहला ओवर डाल रहे हैं और खूबसूरती के साथ इस गेंद को कट किया थर्ड मैन की ओर। 2 रन आसानी से मिलेंगे और पुनीत जो सूझबूझ भरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, टाइम बेहतरीन कर रहे हैं, गेंद पे पहनी निगाह बनाए हुए हैं और 29 रन बनाए हैं। 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। 94 रन स्कोर 10.2 के बाद और 150 के ऊपर स्कोर लगा, तो ये कहना है कि काफी मुश्किल रहेगा बल्लेबाजों के लिए चेज करना। और खासकर इस एंड से जब गेंदबाजी होती है तो उस एंड से बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। 2 की मांग फिर से कर रहे हैं, दूसरे की कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहां एक ही मिलेगा क्योंकि गेंदबाज ने अच्छा चेज किया इस बार और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे बल्लेबाजों को। 34 रन बनाए हैं पुनीत ने, 30 गेंदों का सामना किया अभी तक और प्रीत नगर का स्कोर 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10.3 के बाद। तालिब अपना पहला ओवर फेंक रहे और अश्विनी पहली मर्तबा सामना करेंगे, पहली गेंद खेलेंगे और पहली गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला मिड विकेट बाउंड्री लाइन की और पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। टॉस जीता आज केसीसी टीम ने और कहीं ना कहीं वो फैसला गलत साबित हुआ है कि उन्होंने प्रीत नगर यूनाइटेड को बल्लेबाजी करने का इनविटेशन दिया और काफी यूं कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट नजर आए बल्लेबाज कि उन्हें पहले बैटिंग करनी। इस ऐसे मुकाबले में आपने उन्हें मौका दिया है वापसी करने का। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम के पास उतना ज्यादा दबाव नहीं रहता और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विकेट संभाल के बैटिंग की है और रन्स भी खूब बटोरे हैं। 9 के औसत से रन्स बन रहे हैं 10.5 के बाद 97 ओवर में अभी तक 5 रन आए 5 गेंदों पर। आखिरी गेंद और वापस धकेला इस गेंद को बॉलर के पास, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। 5 रन आए इस ओवर से, 11 के बाद 97 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी लंबा सफर बचा है इस मुकाबले में, 9 ओवर उसका खेल अभी भी बाकी है
और यहाँ से 9 ओवर्स में अगर 70-80 और रन बनते हैं तो 170-180 एक बड़ा स्कोर होगा, एक विशाल स्कोर होगा। काका फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली गेंद हल्का सा शॉट करने की कोशिश की थी लेग स्टंप से बाहर। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उतना उछाल इस विकेट पे नहीं है, तो शॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस विकेट पे। जितना ज़्यादा आप गुड लेंथ स्पॉट के आसपास रखेंगे उतना आप इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन आज गेंदबाज उस तरह से असरदार साबित नहीं हो पाए। रन्स काफ़ी खर्च हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे 11 के बाद 98 रन बने हैं 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और आगे आकर पुनीत ने इस गेंद को ड्राइव किया, एक और रन मिलेगा उन्हें। 36 पे पहुंचे 32 गेंदों का सामना करने के बाद पुनीत। और जो फील्ड उन्होंने सजाया आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग ऑन है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर है और साथ में ऑफ साइड की जानिब 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ और थर्ड मैन वो बाहर रखे गए हैं। इस बार उठाकर खेला, कैच छूटा वहां पे मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी से, आसान सा कैच और ये ड्रॉप होता हुआ मिड विकेट की ओर उठाकर मारने की कोशिश की थी और गेंद हवा में थी, उनके हाथों से टकराने के बाद छिटक गई और यहां अश्विनी शर्मा को जीवन दान मिलता हुआ। 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं। फील्डिंग उस तरह की नहीं रही है आज, हालांकि पहले 2 ओवर्स में करीबन 7-8 रन बचाए थे अपनी फील्डिंग से, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो दबाव बनाया बल्लेबाजों ने, अटैकिंग क्रिकेट खेली जब हरमीत सिंह आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और वार किया था उन्होंने और तेज रफ्तार 42 रन बनाए, सिर्फ 19 गेंदों का सामना किया उन्होंने। और उसके चलते हरमीत ने जो दबाव बनाया गेंदबाजों पे, फील्डर्स पे, वो साफ तौर पे झलक रहा है। 101 रन 2 विकेट के नुकसान पे 11.3 के बाद, और वो जो साथ पुनीत ने निभाया था हरमीत का, और वहां पे हरमीत को मौके मिले थे क्या बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाए। लगातार लेग स्टंप पे अटैक कर रहे हैं काका और वहां एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं रहेगा, ताकि पैड से जरूर गेंद लगी है। एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी लेकिन अंपायर ने नकारा। 11.4 के बाद 102 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अश्विनी जंदियाल की इस ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि आने वाले मुकाबले भी यहाँ से आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर ब्रॉडकास्टिंग पहुंचाए, ताकि आप एंजॉय करें इन वेटरन्स क्रिकेट लीग के मुकाबलों को। और ये 9वां मुकाबला, ये 10वां मुकाबला इस वक्त जारी है। 9वां मुकाबला ग्राउंड 1 पे, 10वां मुकाबला ग्राउंड 2 पे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और फिर से अच्छा ड्राइव ऑन द अप और खराब थ्रो, लेकिन बैकअप सही। 12 मुकम्मल, 102 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कि दूसरी विकेट के लिए जो अच्छी शराकतदारी बनी थी उसे तोड़ने में कामयाब हुए थे काका, लेकिन अब जाके ये 2 बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि एक और शराकतदारी बनाई जाए। पुनीत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि एक मौका जरूर बना था कैच आउट करने का, लेकिन मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने कैच जरूर छोड़ा था, जिसके चलते अश्विनी को जीवन दान मिला है।
यहाँ 104 रन 12.2 ओवर के बाद ये पारी का 13वां ओवर जारी है। तालिब हुसैन अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 7 रन अभी तक वो खर्च कर चुके हैं। सीधे बल्ले से ड्राइव किया, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। 3 गेंदें 3 रन आ चुके हैं अभी तक इस मुकाबले में। इस ओवर में 105 है मजमूई स्कोर। ये 13वां ओवर जारी है। 8.40 के औसत से रन बन रहे। इसी रफ्तार से चले तो 170 के आसपास पहुंचेंगे। और गलत थ्रो, यहाँ पे गलत थ्रो, रन आउट का मौका बन सकता था और जहां विकेट मिल सकती थी रन आउट के तौर पे, वहां सिंगल खर्च किया। और वो दबाव साफ तौर पे नजर आ रहा है, पूरी तरह से नजर आ रहा है केसीसी टीम पे। एक आसान सा रन आउट का मौका नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बना था, लेकिन वो मौका गवा चुके हैं। 106 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। अगली गेंद फ्लाइट हेड, सीधे बल्ले से उठाकर खेला है और 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, उनके पास कोई मौका नहीं। 2 खिलाड़ियों को आसानी से बीट किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चलेगा। 113 रन 2 विकेट के नुकसान पे अश्विनी ने 10 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। पुनीत ने 40 बनाए हैं। इस बार वापस खेला बॉलर के पास और अपने फॉलो थ्रू में कैच लिया। काका के खाते में दूसरी विकेट और यहाँ तीसरा नुकसान, तीसरा झटका लगा है प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम को 113 के स्कोर पे। इससे पहले काका के और मैं कैच जरूर छूटा था, लेकिन अब जाके उन्होंने अश्विनी की विकेट हासिल की। अश्विनी का ही कैच छूटा था, लेकिन उन्हें वापस भेजा है पवेलियन की और अपने ही फॉलो थ्रू में कैच लपका और 113 पे तीसरा झटका लगता हुआ।
सरनजीत नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर, अब क्रीज की ओर आए हैं। वो 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। काका के खाते में दूसरी विकेट, अच्छी गेंदबाजी की है काका ने, विकेट टू विकेट रहे हैं और उसका उन्हें फल मिला है। 14 रन खर्च किए अपने 2.4 ओवर्स में, और ये चीज आपको कामयाबी दिलाती है जब आप अटैकिंग क्रिकेट के साथ जाएंगे, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएंगे, आप सही टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे, वो चीज आपको फायदा देगी। और ऐसा साफ तौर पे दिखाई दिया 113, 3 विकेट के नुकसान पे। और सरनजीत के पहले रन बैकफुट पे गए, इस गेंद को हल्के बल्ले से खेला उन्होंने, जब तक मिड ऑफ पे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका। और यहाँ स्कोर 114 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और कहीं ना कहीं थिंग्स को पुल बैक किया है, वापसी करी है इस मुकाबले में। अगर केसीसी टीम की बात की जाए, आखिरी के जो 4 ओवर है उनमें सिर्फ 22 रन आए हैं और 2 विकेट भी वो निकालने में कामयाब हुए। 14 के बाद 115 रन जो शुरुआत में रन औसत थी, 10 ओवर के बाद 9.20 के औसत से रन बन रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 8.21 के औसत से रन आ रहे हैं। तो अच्छी वापसी, खासकर काका को जब भी बुलाया गेंदबाजी के लिए, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, कंट्रोल किया है उन्होंने रन फ्लो को, और अपने 3 ओवर्स में 2 विकेट हासिल करके सिर्फ 16 रन खर्च किए हैं। और फिर से यहाँ पे अब जाके कप्तान भी समझ चुके हैं कि यहाँ से गेंदबाजों को लगातार रोटेट करना होगा और अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करना, जो भी आपके पास वो गेंदबाजी के वसाइल है। हैरी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, हैरी जिनसे मिड विकेट पे कैच भी छूटा था काका के ओवर में, अब जाके वो गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और अपने स्पेल का वो पहला ओवर डालेंगे। जबकि पुनीत जिन्होंने रन बॉल 41 बनाए हैं, एक छोड़ उन्होंने संभाल के रखा है जरूर, और कोशिश ही करी है कि एक छोड़ संभाल के चले और दूसरे एंड से बल्लेबाज रन्स बनाएं, तब जाके आप एक अच्छे स्कोर की ओर जा पाएंगे। पहली गेंद, और इस गेंद को फ्लिक किया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 2 की मांग कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी वापस पलट रहे हैं। अच्छी रनिंग विकेट्स के दरमियान, वहां जो मिड विकेट लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़कर गए थे उन पे अटैक किया, और जिसके चलते 2 रन हासिल हुए। पुनीत को 43 पे पहुंचे 40 गेंदों का सामना करने के बाद। 117 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 35 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। 8.26 के औसत से रन बने हैं। फिर से गैप में गई है गेंद, लेकिन इस बार सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि तेजी से काका गए थे उस ओर गेंद को फील्ड करने के लिए, और अच्छा आर्म है उनका, उनकी आर्म पे यहाँ पे अटैक नहीं करना चाहेंगे बल्लेबाज। और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं पुनीत। 44 रन बनाए 41 गेंदों पे। सरनजीत जो कि नए बल्लेबाज क्रीज की ओर आए हैं, से वॉइड करार दिया गया है। कर्मों का इस्तेमाल करके क्रीज छोड़कर बाहर निकल आए थे बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन वहां गेंदबाज ने ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद डाली। एक इजाफी रन का वॉइड के चलते खाते में जुड़ता हुआ 119 3 विकेट के नुकसान पे। वहां विकेट कीपर हालांकि जिन्होंने पैड्स का इस्तेमाल किया था गेंद को रोकने के लिए, हल्की सी चोटिल हुए हैं और काफी तकलीफ, काफी दर्द महसूस कर रहे हैं। प्रीत नगर यूनाइटेड की बात करें तो एक मुस्तकम पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। 119 रन बनाए हैं उन्होंने 14.2 ओवर्स के बाद, जिसमें हरप्रीत ने कमाल की बैटिंग करके तेज रफ्तार 42 रन बनाए और पुनीत ने एक छोड़ से 44 रन बनाए। हल्का सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके साथ जुड़ेंगे।
तो अब जाके ब्रेक के बाद हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं, वापस लौटे हैं हम। और हैरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 रन 4 गेंदों पे उन्होंने खर्च किए हैं, 3 गेंदों पे खर्च किए हैं। और पारी का ये 15वां ओवर जारी। और पुनीत अभी भी वो सिंगल्स डबल्स लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अपना 50 मुकम्मल करने के बाद कहीं ना कहीं अब उनको चाहिए कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, अटैकिंग स्ट्रोक्स खेले, तब जाके अपनी टीम को 170 180 के पास पहुंचा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। 4 रनों के लिए सरनजीत के बल्ले से पहला चौका। क्रीज छोड़ के बाहर निकल आए और काफी जोरदार स्ट्रोक, गैप में गेंद गई और वहां किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका सरनजीत के बल्ले से। 10 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर इस ओवर में। आखिरी गेंद का आना बाकी। 8.43 के औसत से रन बन रहे हैं। आखिरी गेंद और डॉट बॉल से ओवर मुकम्मल होता हुआ 15 के बाद 125। 8.50 के औसत से रन आ रहे हैं कि यहां से 170 के आसपास पहुंचेगी टीम। लेकिन अगर पुनीत वहां पे आखिर तक रहे तो मेरा मानना 180 190 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां से आने वाले 5 ओवर्स में अगर आप 12-13 रन हर ओवर बनाते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। फिलहाल ओवर मुकम्मल हो चुका है। ओवर के दरमियान एक और वक्फा लिया गया है। काफी वक्त ले रहे हैं और ये अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना। आपको वक्त के अंदर ही अपनी इनिंग्स मुकम्मल करनी है। और यहाँ करीबन 10-15 मिनट पीछे चल रही है टीम, अगर इनिंग्स के टाइमर की बात करें तो। लेकिन उस चीज का भी ध्यान रखना होगा, खासकर केसीसी यूनाइटेड केसीसी टीम को। विकेट कीपर हल्की सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो जख्मी हुए थे और आखिरी गेंद को फिर से पैड से रोकने की उन्होंने कोशिश की, जिसके चलते वो हल्की सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही खेल का आगाज होगा फिर से, क्योंकि हल्का सा ब्रेक लिया गया है, और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे।
ये एक मर्तबा फिर से आपके साथ जुड़े हैं और लगातार सरनजीत के बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स आ रहे हैं और पिछले ओवर में भी एक चौका उन्होंने जड़ा था, अब जाके एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला है। कुल मिला के अगर बात करें हम 130 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 15.3 ओवर्स के बाद अब जाके उस करंट रन रेट में इजाफा होता हुआ सरनजीत के बल्ले से दूसरा चौका, 6 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाए हैं। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और बोल्ड हो गए, 3 की लाइन को मिस किया, बाहर निकल के आए, क्रीज छोड़कर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कोई मुलाकात नहीं हुई। गेंद जाके सीधे स्टंप से टकराई और 130 के स्कोर पे चौथा नुकसान उठाना पड़ा, चौथा झटका लगा है प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम को। It is wicket number 4 which follows as Saranjit was leaving the crease, coming down the track, and he misses the line of the ball. It crashes onto the middle stump. Joginder bags his second of the day. It has been Kaka and Joginder, the two bowlers who have been successful and have been among us the wickets. They have been productive in their respective overs. It's the final over of Joginder, 2 for 26 in his spell, 130 for 4 after 15.4 overs. We still have 4.2 overs left in the game, and if they get up to 40 odd runs in those 4 overs, they might get 170, 180, and they will be eyeing that. In the meantime, the new batter just arrives at the crease. Though the new batter is at the crease, it's Surya Dev at number 6, and Joginder will be bowling his final ball of the spell. A leading edge pops up in the air, has gone into the gap, luckily for a bowler, for a batter, and that is a wayward throw that has costed them one more run. 16 overs, it's 132 for the loss of 4. Seen Surya Dev is still there, it's Puneet still there, batting on 46, but he needs to have more of a strike now. Out of those 24 balls, he faces 16, 18. He might be the one taking on the bowlers. Joginder finishes, he's done for the day, 4 overs, 2 for 28. And Harry, who conceded 10 in the first, he's back into the attack. The kind of field set he has got on the onside, there is long on, there is wideish mid-wicket. Those two are patrolling the fence with fine leg right at the edge of the boundary. Scalag is in at 30, and he has got short third man, he's got backward up point first ball, and he starts down the leg side. Wicketkeeper fumbles, and that will be a wide at the boundary. 5 runs to the score. That is a fumble behind the stump. Second time the keeper has blundered today. He has let the ball to go through his legs, and this one runs away to the third man. 5 wide takes them to 137, 8.56 the current run rate, and if they go with that, could go up to 171, but might be thinking of 180, 185. He has 6 wickets in hand, just 24 ballers left to the set batter there on 46 of 44, and Harry struggling a bit with his line and length. In the meantime, he bowls a full delivery, and Puneet smashes him, although it was a chance, it might have been a chance. Goes to the fence for a 6. Gets to his half century in style. 52 of 45 bowlers. Has been a very good innings with the bat. A hard fought innings. And it takes Preet Nagar to 143 for the loss of 4 wickets.
That was timed so beautifully. It came off the middle of the bat, meet off the blade, and clears that long on boundary. The fielder was there. Had he been right at the edge of the boundary, edge of the fence, it could have been a catch. But no avail. He was already way inside the ropes, and that has gone all the way. Wide again. Wide again. Pressure on Harry. Struggling big time here with his line and length. Bowling one down the leg side, which costed them 5 wides. Then second one was a juicy half volley that was taken on by the batter, and it takes on everyone for a 6. The second, now next one is wide again. And he swings up in the air and has gone down at long on as well. This is a tame effort in the field, a lazy and dozy effort. Should have been taken. That was an absolute dolly, but the batter is struggling with the cramps out there. This is absolutely hot out here in Jammu, and you can see the batter is facing those problems. He surely is struggling a bit because of his cramps, and he's down right at the center. You can witness the visuals on your mobile screens. ये हल्का सा वक्फा लिया गया था यहाँ पे, क्योंकि गेंदबाज बल्लेबाज जो हैं वो क्रैम्प से स्ट्रगल कर रहे हैं, और हैरी लगातार गेंदबाजी के मोर्चे पे पुनीत के लिए, और इस गेंद को स्वीप किया उन्होंने, सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए, 1 ही रन मिलेगा। 16.3 ओवर्स के बाद स्कोर 145 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ये कुल मिला के 17वां ओवर जारी है। 8.79 के औसत से रन आ रहे हैं। 176 प्रोजेक्टेड स्कोर, और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में प्रीत नगर यूनाइटेड की टीम कामयाब हो चुकी है। हैरी की अगली गेंद इस बार
ऑन साइड की जानिब खेला, 2 की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुनीत जो स्ट्रगल कर रहे थे अब दौड़ रहे हैं चीते की तरह और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। 8.82 की औसत से रन 147 बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। हैरी का स्पेल महंगा पड़ रहा है, महंगा साबित हो रहा है उनका स्पेल, और 25 रन वो खर्च कर चुके हैं अपने स्पेल में अभी तक। खराब गेंदबाजी का मुजाहरा और अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। स्लोवर गेंद थी सूर्यदेव के लिए और मिड विकेट की ओर मोड़ने में कामयाब हुए। फंबल हुआ हल्का सा वहां पे खिलाड़ी से और यहाँ 1 ही रन से रुकना पड़ेगा। 148 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे 16.5 ओवर के बाद। अभी भी एक आखिरी गेंद का आना बाकी है और पुनीत देखना होगा क्या अटैक करेंगे और फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। डॉट बॉल से ओवर मुकम्मल। 17 के बाद 148, 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर बचे हैं और अगर 30 रन भी आते हैं तो 180 के आसपास पहुंचेगी टीम और 180 एक विशाल स्कोर होगा, एक बड़ा स्कोर होगा इस मैदान पे। और खासकर इस तपती हुई धूप में फिर चेज कर पाना, विकेट काफ़ी स्लो होता है क्योंकि वो क्रैक्स काफ़ी ओपन अप होते हैं और विकेट काफ़ी ढीला नज़र आता है, जिसके चलते स्पिन गेंदबाजों के सामने वो स्ट्रोक लगाना काफ़ी मुश्किल रहता है। और तालिब हुसैन अपने 2 ओवर बेहतर किए, 15 रन उन्होंने खर्च किए थे अपने 2 ओवर्स में। और तालिब की बात करें वो 18वां ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं और पुनीत 8.71 की औसत से जाएंगे तो 174 के आसपास पहुंचेगी टीम। और कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों को यहाँ से 18 गेंदों पे 30 से ज़ायद रन जोड़ने की। और मेरा मानना है कि 160 के ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहेगा चेज करना। इट विल बी डिफिकल्ट टू चेज। तालिब हुसैन is just setting his field. He knows where to place the fielders. He wants those fielders at the respective positions. First ball to Suryadev, although there will be a single fumble there by the fielder has resulted in a couple there. And there has been the problems. There have been drop catches. There have been misfielders. That is what we call a pathetic approach in the field, and it's costing them big time. It's costing them the game. It's costing them big time. A slower delivery, down the track he goes, just over, jumping and leaping long off. Clears that boundary. There was a fielder at long off, but he tried his level best, but it was just over his head, just clears him and gets the much needed 6. Suryadev, 13 of just 6 bowlers, and it takes the tally to 156 for 4, going at 9 runs per over, and they are up to a very good score. Now he switches round the stumps and was right in the block hole. The call is for 2 and comes back. Excellent running. 8-10 of first 3 bowlers. 158 for the loss of 4 after 17.3 overs. That is an excellent score on board. 15 deliveries left, and you see Suryadev is straight away trying to go for big shots. You know, there isn't much left in the game now with 15 bowlers, and it's the death stage of the game where the batters do tend to go big. Although it's a no ball, it will be a beamer, and he pushes that one in the gap. Although a single, it's gonna be a free hit now. 160 for 4 and a free hit to a well set batter, but the problem is he's struggling with cramps. Has been struggling with running between the wickets, couple of overs, and now can he hit this one out of the park? As it's a free hit, it's a license to the batter, and he struggles down the leg side and a bye conceded. This is absolute frustration in the field for the fielding side and for the bowler as well. There have been enough extras where the batters
where the bowlers will have to think upon, they will have to mull upon these extras have been conceded. 162 it is, and has been a very expensive over. Down the track goes Suryadev to long off, a single to get. Still 2 more deliveries to go. Has been a very good over for the batting side. 15 coming off this over. 2 more to go. One of the biggest overs of the innings so far, of the game so far. Puneet, what a knock this has been. He is struggling a bit. There was a loud shout as the keeper and the bowler thinks that there was some bat on it, but umpire doesn't think so. He says no, he shakes his head. Still got a ball to go in this over, and Talib has been expensive, costing them an arm and a leg. The final ball, and he goes across the line, goes to long on. A single, he will keep the strike. 18 overs gone, 163 for 4. मिला के अगर बात करें हम, 19वें ओवर की शुरुआत हुई है और काका जो कि अभी तक के सफल और कामयाब गेंदबाज, 2 विकेट लिए निकाल चुके हैं, 16 रन वो खर्च कर चुके हैं 18.1 के बाद 165 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और जो रन औसत इस वक्त जारी है उस हिसाब से चलेंगे तो 182 तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ 190 को टारगेट कर रही होगी टीम। वो चाह रहे होंगे कि 190 के आसपास पहुंचा जाए, कि काका अपने स्पेल का आखिरी वो डाल रहे हैं। एक और सिंगल मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, कि सूर्यदेव ने भी अच्छा खासा यहाँ पे काम किया है अपने बल्लेबाजी से। 10 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाए हैं, लेकिन पुनीत लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अब क्रैम्प से, जिसके चलते वो बड़े स्ट्रोक्स उनके बल्ले से नहीं आ रहे हैं। और 2 की मांग जरूर की है, लेकिन यहाँ 1 रन से ही रुकना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 ही रन मिलेगा। 9 गेंदें बची है, 167 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लग चुका है और काफी मुश्किल रहेगा दूसरी पारी में चेज कर पाना। बाकी विकेट आज काफी अच्छा बिहेव किया है, विकेट बेहतरीन रहा है बल्लेबाजी के लिए। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। फिलहाल 4 गेंदें, सिर्फ 4 रन आए हैं। और काका ने कमाल की गेंदबाजी की, बाकी गेंदबाजों को छोड़कर वो महंगे जरूर साबित हुए हैं। और जिस तरह से काका ने गेंदबाजी की है, the batters needed, the bowlers needed to take the lessons from this man, the way he has bowled. Oh, that's a wonderful shot. He backs away, exposes all the stumps, but finds the fielder at deep cover. He's staying happy with a single. And you gotta give credit to Puneet for his fighting spirit. He's been a warrior with the bat so far. 56 of 53, although his strike rate has been a matter of concern, but he still thinks that his team has that above par score. And he made it sure that he stays till the end, till the last. That is straight as a die. Goes on the bounce to the fence. Suryadev now joins the party. The final ball. He finds the much needed boundary of this over. 9 conceded, still with the boundary. And 19 overs gone. 173 for 6 for 4. It was a fine little shot of the batter Puneet. Couple of steps down, meets the ball on the full,
and he hits it to the safest area of the park, straight over the bowler's head, and he gets the boundary. He gets that much needed boundary, although they were not big shots in that over, and he finishes it with a boundary. Oh, he's going to bowl the final over now. Oh, a very good score on board. They have the defendable score on board, and I could see that lot of pressure on K.C.C team chasing on this wicket. A sluggish surface, more than 9 runs per hour, is not going to be easy. With Surya Dev hitting the ball well, 23 of 12. Puneet 56 unbeaten, and can you believe it, he is there for nearly 100 minutes. This innings has taken a lot of time to carry. Suresh will bowl the final over. Though Puneet is there, Suresh, 3 overs, none for 26. Expensive in terms of the game. He helps that one round the corner. Fine leg is there. Well, they will be happy with a single. 5 balls to go in the first innings. And Suresh, none for 27. Got a Surya Dev out there, is batting so well. And it's been a good phase of a good session of play for PREET United. And again, hits it really hard down the ground, but well fielded by the fielder at long off. Keeps them for a single. 4 deliveries remaining now, and if they get a big shot, they will cross 180 barrier. They will cross that 180 run mark. Oh, that's way down the leg side. Dribble this one. The problem for the bat bowlers have been number of extras. If you look at the Greek heroes, there might be more than 30 extras have been given by the bowling side, and that's where you need to work. Here playing a big tournament, and the bowlers need to be that pinpoint accurate. Oh, that has been swept away, and swept away on the bounce to the fence. That was a superb strike of the batter Puneet, although after a long time he hits a boundary. But this one comes at the right place, right time. Beats that scare leg fielder. On the bounce it goes to the fence. 180 for 4. That is a mammoth score. And I guess this is the highest score of Veterans Cricket League out of those 9 or 10 matches which have been played. 3 more deliveries left. That is wonderfully executed. Back-to-back boundaries for Puneet. This one, he was more on to the timing. Exquisite of his bat and into the gap. Runs away. Back-to-back fours. 184 now for the loss of 4 wickets. It's gone more than 180 now. They are up to 190. Puneet has played a sensational innings. 65 unbeaten so far of just 56 bowlers. He is now trying to up the ante. 2 more bowlers left. Expensive Suresh. Wide again, and pressure on the bowler. 185 for the loss of 4. I told you this is already the highest total of Veterans Cricket League. It is PREET NAGAR United. They hold the record. And Puneet has been the man who has done the bulk of scoring, who has done the damage at the top, and he will stay unbeaten. He is now at the non-strikers, and we have a final ball coming up. 186 for 4. Suresh with the final ball, and this has been taken at long off. A wicket of the final delivery, but still they finish on a strong note. They finish on 187.6. As we will take a short little break, we'll be bringing you the live action of the run chase as well. Until there, take care. Goodbye.